तो इसको धन्यवाद वुड लाइक टू वेलकम इस सो मैं आपको छोटा सा महाराज का इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरे पास अंग्रेजी भाषा में है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। महाराज जी वो तस्कैंड के अंदर यानी सोवियत यूनियन जो आज रशिया है उसके अंदर उनका जन्म हुआ था और उनकी जो आध्यात्मिक जीवन की जो शुरुआत है वो 1980 में हुई, जब काफ़ी डिफिकल्ट समय चल रहा था, कम्युनिस्ट era चल रहा था और वहाँ की KGB जो थी वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। तो वहाँ पे क्या है, कोई धार्मिक प्रवृत्ति आप नहीं कर सकते, कोई आध्यात्मिक प्रवृत्ति पे बैन करना चाहिए। तो उस समय में 1980s में महाराज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बने, आध्यात्मिक जीवन को अपनाया। तो बहुत कठिन समय था उस समय रशिया में। जो भी दिखे कोई भी धार्मिक पुस्तक के साथ या कोई ऐसे भगवान का नाम ले रहा हो, कोई भक्ति कर रहा हो, तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। इस प्रकार की गवर्नमेंट थी। तो उस समय महाराज ने उन सब डिफिकल्ट टाइम में महाराज ने वहाँ पर अपनी भक्ति की शुरुआत की और बहुत सारे तकलीफ आने के बावजूद भी महाराज जी ने जो एज ए साइंटिस्ट मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और मॉलिक्यूलर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएट किया। तो रशिया के उन्होंने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किया और एक बहुत बड़े महाराज साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट और उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर रिसर्च करूँगा, एक्सपेरिमेंट करूँगा। तो उन्होंने ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट है, हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर अपना रिसर्च शुरू किया और 1988 से लेके 1995 तक वो शिव गोपाल जी की पुस्तकों को रशियन भाषा के अंदर ट्रांसलेट कर रहे थे और उस ट्रांसलेशन को उसका महाराज जी हेड थे। तो महाराज ट्रांसलेटेड द रशियन बुक्स, इंग्लिश बुक इनटू द रशियन लैंग्वेज, क्योंकि वो उस समय अलाउ नहीं था, वो एक गुना था, क्योंकि वो छुट्टी से ये सब चीज़ें सब कर रहे थे। और 1995 के अंदर उन्होंने ऑफिशियली रशिया के अंदर ये जो मूवमेंट जो हरे कृष्ण मूवमेंट को आगे ले गए और उसका लीड करने लगे। तो महाराज रशिया के अंदर 1995 से इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं और 1997 से 2017 तक महाराज जी इसको के GBC रह चुके हैं 20 साल गवर्निंग बॉडी कमीशन। तो उसके लिए उन्होंने सेवा की है। उनका जो मेन प्रचार का जो स्थान है वो मॉस्को और रशिया के और कई सारे और जो इलाके हैं, जो शहर है, वहाँ पे मेरी महाराज प्रचार करते हैं। यानी मेरी महाराज का प्रचार का स्थान होता है रशिया। रशिया के अंदर हरे कृष्ण महामंत्र का वो प्रचार करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। और उन्होंने साथ साथ आर्मीनिया, जॉर्जिया, इजराइल और साउथ कोरिया ऐसे देशों में भी एक कृष्ण भगवान का प्रचार किया। और महाराज जी जो है शिव गोपाल जी के प्रिय शिष्य राधानाथ स्वामी महाराज जी के शिष्य है और उन्होंने 2001 में राधानाथ स्वामी महाराज जी से संन्यास दीक्षा ग्रहण किया है। और अभी महाराज जी पूरे विश्व के अंदर कृष्ण भगवान का प्रचार करने के लिए बहुत ही ट्रैवल करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं और ऐसे प्रवचन करते हैं। और 2005
दीक्षा गुरु भी बन चुके हैं। तो महाराज 2005 से दीक्षा भी दे रहे हैं। तो एक और छोटा महाराज जी का मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया इंट्रोडक्शन। आप देख सकते हैं कि महाराज दर्शन में यहाँ पे राधा कृष्ण राम एक कोई जानता नहीं, पर वहाँ पे महाराज जी ने जो बार के पुस्तकों से आकर्षित होते शुरू किया नहीं, पर इतना आगे बढ़े कि और भी दर्शन लोगों को उन्होंने विष्णु भक्त बनाया और पूरे विश्व में आज लोग प्रचार कर रहे हैं और दर्शन लैंग्वेज में उन्होंने पुस्तकें ट्रांसलेट की। ये सबसे बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है श्री गोपाल के संगठन में। एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के महाराज जी का हार्दिक स्वागत करेंगे उसका अहमदाबाद में। जो महाराज जी यहाँ पर बता रहे हैं हमें दे रहे हैं, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम बाय चैटिंग लाउडली हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम महाराज का जो प्रवचन है आज शिव कथा के ऊपर रहेगा। महाराज जी शिव कथा बताएंगे हमें भागवत से, अंग्रेजी में बताएंगे। हम प्रयास करेंगे ट्रांसलेट करने का। अगर किसी बच्चे को अच्छा आता है तो कृपा करके स्टेज पे आ सकते हैं। एनीबडी कैन ट्रांसलेट बेसिकली आई डोंट नो मच ट्रांसलेशन बट इतना बता कर तो अगर कोई अच्छे से आप कर सकते हैं। हाँ ये भी ट्रांसलेट ओके हरे कृष्णा। तो we would like to welcome the Maharaj directly. Please let's request करूँगा महाराज को गाने में करें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। थोड़ी क्षण में महाराज जी के बाद दूसरे जो स्पीकर है वो जो आज बता रहे 5 बजे पिछले साल लोग वो भी आएंगे और वो भी कुछ छोटा 15-20 मिनट का घटना हमें सुनाएंगे। ओम नमो भगवते वसुदेवाय। ओम नमो भगवते वसुदेवाय। ओम नमो भगवते वसुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रयस्वभादृशु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुभाव पुत्रेति तन्मयतयोतरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि। हरे कृष्णा। मैं बहुत खुशी हूँ आपके साथ व्यवस्थित। आज शिवरात्रि है, हम कुछ प्रवचनम करोमि।
Okay, so I will speak in English. I feel much more at home when I speak English. We will read with you 19th verse from the 7th chapter of the 8th canto of Srimad Bhagavatam, which is entitled, Lord Shiva saves the universe by drinking poison. Tadugravegam dishidishyupari adho visarpat utsarpata sahyam apratibhitah prajadudruvur anga seshvara apraksyamanah saranam sadashivam. Translation by Srila Prabhupada. O king, when that uncontrollable poison was forcefully spreading up and down in all directions, all the demigods, along with Lord himself, approached Lord Shiva, Sadashiva. Feeling unsheltered, they very much afraid they sought shelter of him. Lord Shiva One may purport by Srila Prabhupada. One may question that since the Supreme Personality of Godhead was personally present, why did he accompany all the demigods and people in general to take shelter of Lord Sadashiva instead of intervening himself? Srila Madhvacharya, in this connection, Srila Madhvacharya warns. Rudrasya yashasorthaya svayam vishnur visham vibhu nasanchare samarthopi vayuksho che prashantaye. Lord Vishnu was competent to rectify the situation, but in order to give credit to Lord Shiva, who later drank all the poison and kept it in his neck, Lord Vishnu did not take action. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Yantah Pravishya Mam Vacham Mam Prasutta Sanjeevaya Dakila Shakti Darasvadam Anyamscha Hasta Charana Shravana Bhavali Pranam Namo Bhagavate Purushaya So I'm very happy to be with you on this night of Shivaratri. This night of Mahashivaratri has a great significance. For those who are following Lord Shiva, it's the greatest festival during the year. But from Srimad Bhagavatam we also know that Lord Shiva is the greatest Vaishnava.
ये भी बताता है कि लॉर्ड शिवा सबसे बड़े भक्त हैं। Vaishnavanam Yathashambhu. In the 12th canto of Srimad Bhagavatam, Sutta Goswami says that, like among the rivers, Ganga is the greatest. Among all the devas, Achyuta is the greatest. Among all the Vaishnavas, Shiva is the greatest. श्रीमद् भागवत का जो 12वां canto है, उसको हमें बताता है कि जितनी भी सारी पवित्र नदियाँ हैं, सबसे जो पवित्र नदी है वो श्रीमती गंगा नदी है। और उसी तरह से जो सबसे पवित्र वैष्णव है, उसमें अच्युत जी सबसे वैष्णव है। और जो सबसे बड़े भक्त जो सबसे उचित है वो लॉर्ड शिवा है। So we also worship Lord Shiva with great awe and reverence, celebrating his great devotion to Lord Vishnu. अपने लॉर्ड शिवा जी का प्रार्थना करनी चाहिए, उनका सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि वो लॉर्ड विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। And in Srimad Bhagavatam, in many stories, the greatness of Lord Shiva is being revealed. श्रीमद् भागवत का ग्रंथ है, इसमें लॉर्ड शिवा के बारे में काफी सारी ऐसी वास्तविकता का उल्लेख किया गया है जो हमें पता चल सकता है। And his main greatness is that he wants to serve to the Supreme Lord by doing some ungrateful service. लॉर्ड शिवा ने जीवन में सबसे बड़ा गुण अच्छा है कि वो लॉर्ड विष्णु की सेवा करनी है, वो उनका सबसे बड़ा अच्छा गुण है। We all try to serve the Lord, हम सब अपनी कोशिश करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकें। but we always think, if I serve the Lord, he will give me something good. लेकिन हमारा जो मन में जो हमारी जो शंका होती है कि हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान हमें कुछ उसके बदले में देंगे। We may not state it very openly, but we all somehow or other expect or count that he will give me some mercy. कहीं ना कहीं हमारे जरूरी विचार आता है जो हम खुद के बता नहीं पाते, करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि अगर हम कुछ भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान उसके बदले में हमें कुछ देंगे। We come to the Lord in front of him. He is standing in the altar and we say, my dear Lord, I don't want anything, but you know better what I need. इस तरह हम लोग मंदिर आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान के सामने उपस्थित रहते हैं, तो हम शायद कभी न कभी विचार करते हैं कि मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ अपेक्षा रखते हैं। But this is not real service. पर ये जो सही सर्विस का मूल्य नहीं है, ये सही सर्विस नहीं है। Srila Rupa Goswami says that the real service starts when you are anya vilashata shunya jnana karma janavritam anukulyana krishna nushilana. This is the real service. श्री रूप गोस्वामी हमें बताते हैं कि जो सच्ची सेवा है वो बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के किसी कारण में होनी चाहिए। And Lord Shiva exemplifies this spirit of service when he doesn't expect anything for his service. और जो भगवान शिव जी हैं वो इस गुण को एग्जाम्पलीफाई करते हैं, लेकिन उनके मन में हृदय में ऐसा कोई विचार होता है। He, in the Shastras, on many occasions it is described that Lord Vishnu gives him the most ungrateful service. शास्त्रों में कई बार इसका उल्लेख किया गया है कि जो भगवान विष्णु जी हैं वो लॉर्ड शिवा को बहुत ही अनकंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल सेवाएं देते रहते हैं। He, we know, is the destroyer of the universe. When the time to destroy the universe comes, then Lord Shiva starts his Tandava Nritya and the whole universe is being destroyed. लॉर्ड शिवा की सेवा जो ये है, जैसे कि प्रकृति में ऐसे कोई भूकंप में ऐसा कोई आघात होता है तो लॉर्ड शिवा की सेवा शुरू होती है और वो अपना तांडव शुरू करते हैं। This is very ungrateful service because if somebody is destroying something, nobody glorifies him. ये जो भगवान विष्णु ने लॉर्ड शिवा की जो सेवा की है, ये बड़ी ही अनएक्सपेक्टेबल या अप्रिशिएटेड सेवा नहीं है, बल्कि लॉर्ड शिवा की सेवा की गई है। If somebody builds something, everyone glorifies him. He builds such a beautiful temple. अगर कोई भक्त कोई बहुत ही बड़ा अच्छा आकर्षक मंदिर बनाता है तो सब भक्त उनके गुणगान गाते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। But if somebody comes and smashes this temple to pieces, nobody will say, thank you very much, you did such a good service. बट वही मंदिर अगर कोई आगे से तोड़ दे उसको पूरा खत्म कर दे तो कोई उसका अप्रिशिएट नहीं करेगा। But it's also necessary, it's a necessary service. और ये सेवा भी महत्वपूर्ण है। Or sometimes
Lord Shiva has to give some benedictions to some demons. कभी कभी लॉर्ड शिवा को किसी भक्त को किसी demon को भी कोई benediction या कोई ऐसा श्राप देना पड़ता है. Or in this story of Srimad Bhagavatam, which we just read, this one verse, Lord Shiva has to drink poison. इसी दृश्य में भागवत में देखते हैं कि कई पास्ते में लॉर्ड शिवा को विष पीना पड़ता है. You know, we all expect that we do some service and they give us some Mahaprasad. हम भी कैसे अपने ड्यूटी में कोई सेवा करते हैं तो हम भी अपेक्षा करते हैं कि हमें भी महाप्रसाद मिलना चाहिए. And Lord Shiva comes and they give him the most dangerous poison which is there. Please drink, this is your award. उसी प्रकार जैसे लॉर्ड शिवा की सेवा करते हैं तो उनको महाप्रसाद के बदले विष दिया जाता है. ये आपका अवार्ड है, ये आपका प्राइज है. And if we would be treated like this, I don't know for how long we could be treated like this and still believe in the Supreme Lord and still worship Him. अगर हम भक्त अगर हमारे साथ ऐसा कभी हो तो हमें नहीं पता था कि कितने व्यक्ति कितनी देर तक इसको सहन कर पाएंगे. और जबकि लॉर्ड शिवा जी को कोई सेवा नहीं की है फिर भी वो लॉर्ड विष्णु को तो पूरा फेल करते हैं. Actually, this fact that Lord Krishna and Lord Vishnu give the most difficult service to Lord Shiva means that they have complete trust to him. जो भगवान विष्णु जी या कृष्ण जी हैं ये जो सेवा लॉर्ड शिवा जी को देते हैं वो इसके लिए दी गई है कि लोग उनको लॉर्ड शिवा जी पर बहुत ही विश्वास है और बहुत ही ट्रस्ट है. If we trust somebody, we will do something very ungrateful to him because we know that his devotion will not swear, his devotion will not change because of this ungrateful service. और हम जिस भक्त के ऊपर विश्वास ज़्यादा करते हैं हम उससे कितना भी दुख भरा काम के लिए सोचते हैं ऐसी सेवा के लिए सोचते हैं हमें ये हमेशा निधन में रहता है कि इसकी जो भक्ति है वो कहीं नहीं जाएगी. So we have to understand very nicely who Lord Shiva is. First of all, we have to understand his tattva, his nature, his truth about him, and then we will be able to understand all these leelas properly. तो हमें लॉर्ड शिव जी के नेचर को समझना बहुत जरूरी है और हम अगर स्वभाव को समझ पाएंगे सबसे पहले तो ही हम उसके आगे के जो पास्ते से और उनके जो दुनिया है वो हम समझ पाएंगे. So in Brahma Samhita, Shiva Tattva is described very beautifully. ब्रह्म संहिता में शिव तत्व को बहुत ही अच्छी तरह से उदाहरण दिया गया है. Shiram yatha dadi vikara vishesha yogat sanjataya abhitatha pritakasti heto. So Lord Brahma, while praying to Lord Govinda, Govinda Madhipurusham Tamaham Bhajami, he says that Kshiram yatha dadi vikara vishesha yogat. In the same way as yogurt and milk is the same substance, so Lord Shiva or Shambhu is the same substance as Lord Vishnu. जैसे हमें पता है कि जैसे दही और जो दूध है वो सेम ही सब्सटेंस है ठीक उसी तरह ही जो भगवान विष्णु जी हैं और भगवान विष्णु हैं वो भी एकदम सेम है. Milk and yogurt is the same. Because yogurt is only coming from milk. You cannot make yogurt from, I don't know, from wood or from tea or whatever. But it's vikara vishesha yoga. It's a different transformation of the same substance. And the meaning of this is very, very important and significant. It is explained in the same Brahma Samhita what is this vikara, what is this transformation which is taking place when Lord Vishnu transforms into Lord Shiva. Lord Vishnu is completely transcendental to this world. It has nothing to do with this world. Lord Vishnu जो है कृष्णा वो इस पृथ्वी से इस पृथ्वी से एकदम अलग है उनको इस जगत से कोई लेना नहीं है. Even Shankaracharya
Srila Prabhupada often quoted his statement from his commentary to Bhagavad Gita. He says, Narayanam paro avyaktat. शंकराचार्य जी ने अपने ग्रंथों में इसके बारे में उल्लेख किया हुआ है। Narayanam para avyaktat. He is transcendental to this vyakta, to this manifest world. भगवान विष्णु जी जो है वो इस अद्भुत पृथ्वी से पूरे ट्रांसेंडेंटल है। उनका पृथ्वी से प्रपंच से कोई जाना। So Lord Vishnu is not in touch with this world, is not in touch with matter. लॉर्ड विष्णु जी का इस पृथ्वी से का इस लोक से कोई संबंध नहीं है। But at the same time, we always say that Lord Vishnu is everywhere, Lord Vishnu is here, Lord Vishnu is controlling everything. बल्कि हमेशा जानते हुए हम कहते हैं कि भगवान जो विष्णु जी हैं वो इसी पृथ्वी को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, उसी पृथ्वी को पूरा चला रहे हैं। In reality, when we say this, we mean Lord Shiva. और हम जब ऐसा कहते हैं तो भगवान विष्णु जी हम भगवान शिव जी के बारे में ऐसे सोचते हैं, हम ऐसा कहते हैं। Because in the form of Shambhu, Lord Vishnu comes in contact with this material energy. ठीक उसी प्रकार विष्णु भगवान है और शिव शंभु जी के रूप में आके इस पृथ्वी को पूरा कंट्रोल करते हैं। Lord Shambhu is the personification of Lord Vishnu's glands. तो भगवान शंभु जी जो है शिव शंभु जी वो भगवान विष्णु की आंखों के विष्णु के अपीयरेंस है। It is explained in the Upanishads that Lord Vishnu creates this material world by glancing over material nature. ऐसा ग्रंथों में कहा गया है कि जो भगवान विष्णु जी हैं वो इस पृथ्वी को अपने दृश्य के थ्रू अपने आंखों के थ्रू इसको क्रिएट करते हैं। His glance has such a power that his glance, by casting his glance over material nature, his glance take shape of Lord Shambhu. भगवान विष्णु की जो दृश्य है देखते हैं वो इतनी पावरफुल है कि उनकी ग्लास उनके गजब के थ्रू पूरा परफेक्ट जो मैनिफेस्टेशन है वो होता है और शिव शंभु जी का अपीयरेंस होता है। And Lord Shambhu is coming in contact with material nature, creates all other living entities. और वो भगवान विष्णु के अंदर में जो शिव शंभु जी भगवान है वो मटेरियल नेचर का मैनिफेस्टेशन करते हैं। So, Srila Bhaktivinoda Thakur, while explaining these verses from Brahma Samhita, he actually in detail explains the transformation which takes place when the Lord comes in touch with the material energy. श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी भगवत गीता में बताते हैं कि किस तरह लॉर्ड विष्णु इसका ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको उसका उदाहरण देते हैं। Lord Vishnu is great, भगवान विष्णु बड़ी महान है। but when he comes in touch with the material energy in the form of Lord Shambhu, of Lord Shiva, he gets a little particle of minuteness. वही भगवान विष्णु जो बहुत ही बड़े महान हैं, इनका जब मटेरियल नेचर से कनेक्शन होता है थ्रू लॉर्ड शिव शंभु जी, तब उनको अपना जो वो है बहुत ही छोटा सा बहुत ही माइन्यूट लगता है। And he also keeps away, he has his ahankar, his ego, which makes him separate. और भगवान का जो अहंकार होता है वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उनको हमेशा अलग रखता है। And from this transformation of minuteness and ahankar and chit shakti, when chit shakti is mixed with these elements, the nature of Shambhu Tattva comes into place. और वही जो नेचर है जो माइन्यूटनेस का भगवान का बता रहे हैं, तब जाके शिव शंभु जी की जो एक्चुअल अपीयरेंस है और इनका जो कार्य है वो हमारे सामने आता है। When we look at ourselves, because we are little replicas of Lord Shiva, जब हम खुद को भी आपस में देखते हैं तो हम भी कहीं न कहीं छोटे से लॉर्ड शिवा के एक पार्ट बनते हैं। we all have ahankar. हम सब अहंकार हैं। Somebody doesn't have ahankar? We all have false ego. हम सब में फॉल्स ईगो है, हम सब में अहंकार है And we have this minuteness. और हम बहुत ही तुच्छ हैं। Very tuchha, yes. So,
This is all creation of Lord Shiva. He facilitates our existence in this material world. ये सब भगवान शिव जी का ही क्रिएशन है इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। But actually, he comes here in his manifest form as Lord Shiva to teach us what we should do with this ahankar and with this nature which we have. इसी प्रकार भगवान जो प्रकट होते हैं वो हमें ये दिखलाने आते हैं हमें इस नेचर को हमारे जो अहंकार है जो फॉल्स ईगो है उसके साथ हमें क्या करना चाहिए। Yes, we all have this independent nature. हम सब में एक अलग-अलग प्रकार की प्रवृत्ति है और एक नेचर है, इंडिपेंडेंट नेचर है। Yeah, when we become teenagers, we become very independent. जब हम अपने टीनेजर्स में होते हैं तब हम बहुत ही इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। Because of this ahankar, because of this false ego. उसका कारण ये है कि हम सब में अहंकार आता है और हम सब में फॉल्स ईगो होता है। But again, Lord Shiva teaches us what to do with this. Actually, if we employ this independent nature in the service of the Supreme Lord, we can transcend this independent nature. तभी भगवान शिव जो है वो हमें बताते हैं कि हमें हमारे व्यवहार से इस कुछ अहंकार से हमें क्या करना चाहिए और हमें उसके कैसे आगे बढ़ना चाहिए। And how to do this, Lord Shiva also teaches us. और वो कैसे किया जाए वो भी हमें लॉर्ड शिवा बताते हैं। He teaches us that the method of transcending our conditioned nature or of our independent nature is to always think about the Supreme Lord. और भगवान शिव जी जो है हमें उस तरह से सिखाते हैं कि हमारा जो छोटा सा अहंकार है जो फॉल्स ईगो है हमें ट्रांससेंड करने के लिए सिर्फ भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए। And to be always ready to render the service to the Supreme Lord. और हमें हमेशा भगवान को भगवान के भक्तों की सेवा में होना चाहिए। Like in this particular story which we read from, story of Srimad Bhagavatam which we read from, Lord Shiva is exemplifying this spirit of service that he is drinking the poison. ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने श्रीमद् भागवत में ये श्लोक से देखा है कि भगवान जो शिव जी हैं वो कैसे अपनी सेवा विष पी के भगवान की विष्णु जी को खुश करना चाहते हैं। We all know this story when the demigods and demons were churning the milk ocean. And then the first thing which appeared from the milk ocean was the Kalakuta poison. हम सब ये जानते हैं कि जब कृष्ण का रोशन हो रहा था तो जो सबसे पहला रोशन हुआ था वो पहला रोशन कृष्ण। And this Kalakuta poison was so terrible that it started spreading all over the universe. और जो विष का निकला था वो इतना खतरनाक और इतना गहरा था कि वो पूरी पृथ्वी पर फैल रहा था। It's actually very significant because this churning of the milk ocean exemplifies our endeavors on the spiritual path. ये जो पृथ्वी में वास्तव में चर्निंग ऑफ द मिल्क ओशन जो भी पूरा रहस्य होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए बिकॉज ये भी एक तरह का प्रोसेस ही है कि हमें हमारे नेचर को कैसे चर्न करके उसको भगवान की सेवा में लाना चाहिए। Ultimately, we all want, by doing our sadhana, by doing our spiritual practice, we all want to achieve Amrit. हम सभी ये प्रयास करते हैं कि हम हमारी सेवा भक्ति करते हैं हमारी साधना करते हैं कहीं ना कहीं तो उसका कुछ तो अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। Why do we do this japa? Why do we come to the temple? Because we are afraid of death. हम जो जप करते हैं हम रोज मंदिर भगवान के दर्शन करने आते हैं हम क्यों करते हैं क्योंकि हम सभी मौत से डरते हैं। We want to achieve this state when there is no death. हम सबको वो स्थिति अचीव करना है बियॉन्ड डेथ। And when demigods and demons are churning this milk ocean, they also want to achieve Amrit. जो डेमिगॉड्स हैं जो भोजन के कोशिश को चर्न करते हैं उनका भी यही है कि हमें इसके आगे बढ़ना है और उसके आगे परसेंट करना है। But Amrita doesn't come very soon. जो अमृत है उसको आने में बड़ा समय लगता है। We all know Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Didn't come. हम सब जानते हैं कि हम जब महामंत्र का जप करते हैं तो काफी प्रयास होता है काफी उसमें समय लगता है और कितना समय लगता है ये हम जानते नहीं। But poison comes. बट हमें आ जाता है। Sometimes we feel very dejected, sometimes we feel very,
down, we're doing this spiritual practice, and nothing comes. हमें काफी बार ऐसा लगता है कि हम अपनी साधना भक्ति करते हैं, रोज जप करते हैं, रोज माला करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन हमें उसका कोई पॉजिटिव या कोई रिटर्न नहीं मिलता है। Instead of Amrit, so many problems come to our head. और कुछ पॉजिटिव होने की बजाय हमेशा कुछ न कुछ नेगेटिव ही होता है, कोई ना कोई दुआएं नहीं आती हैं। So this is the first thing, this is proper, this is very bona fide that the problems comes. यही सबसे पहला स्टेज है हमारी साधना भक्ति को और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जहाँ पे तकलीफें आती हैं समझो वही हमारी सही शुरुआत है। Because inside us there are so many problems, and when we start churning, when we start spiritual practice, all these problems, they surface, they become visible. जिस तरह हम अपने अंदर की आत्मा में देखते हैं, जैसे हम हमारी साधना भक्ति करते हैं, धीरे-धीरे जो भी हमारे अंदर जो गलतियां हैं, जो भी गलत प्रकार के नेचर है, वो हमारे सामने बाहर होने के आते हैं। It's not that this poison is coming from somewhere, it's coming from us. It's already there. ऐसा नहीं है कि ये बाहर किसी थर्ड एलिमेंट से किसी आ रहा है, ये हमारे अंदर छिपे हुए जो डिफिकल्टीज हैं, जो भी हमारे नेचर प्रॉब्लम्स हैं, वो ही सामने आ रहे हैं। So in the same way, when the demigods and demons were churning this milk ocean, the poison surfaced, and it appeared that this poison will kill all the living entities in the universe. ठीक उसी तरह जैसे सब डेमिगॉड्स उस मिल्क ओशन को चर्न कर रहे हैं, और जो भी विश्व के सामने उभर के बाहर आ रहा है, उनको ऐसा लगता है कि पूरा जो विश्व है उसकी पृथ्वी को अभी खत्म कर दिया। And when this happened, all the demigods together with Lord Vishnu himself came to Lord Shiva. और जब ये विश्व बाहर आ ही रहा था, सारे जो डेमिगॉड्स उपस्थित थे, वो लॉर्ड विष्णु के पास जाके सीधा लॉर्ड शिवा के पास गए। They approached Lord Shiva and started praying to him, please do something about this problem which we have. सब डेमिगॉड्स जो है विष्णु भगवान जी के साथ शिव जी के पास आके उनको प्रार्थना कर रहे थे कि आप प्लीज इसका कुछ कीजिए। Basically, that signifies that when we, during our spiritual practice, encounter some problems, we have to approach somebody who will be able to help us. ठीक उसी तरह जिस तरह हमारी साधना भक्ति करते हैं और हमें जब हमारे कुछ अद्भुत दिखते हैं, तो हमको भी किसी सीनियर के पास या किसी काउंसलर के पास किसी आगे चलके किसी अपना एडवाइस लेना चाहिए। You know, we need to give somebody our poison. हमें हमारे जो विषय हमारी जो तकलीफें हैं किसी को दे देनी चाहिए। Otherwise, this poison will kill us. एक तो विषय हमें खत्म कर देंगे। We all know that when we have all these problems, we have to give these problems to somebody. हम जब जानते हैं कि हमारे पास इतनी सारी तकलीफें हैं, तो हमें हमारी तकलीफें किसी और को देनी चाहिए। And in the same way, the demigods and demons, they came to Lord Shiva and started praying to him, please take this poison. ठीक उसी तरह जो बाकी के डेमिगॉड्स हैं, वो शिव जी के पास आते हैं, उनको प्रार्थना करने लगे कि आप प्लीज ये विश्व को कुछ कीजिए। And Lord Shiva was not alone, he was sitting with his wife, Bhavani, Parvati. और उस प्रकार लॉर्ड शिव जी अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी पार्वती जी थी। And all the demigods, they knew that, you know, it's one thing to make Lord Shiva to agree with this, it's another thing if Parvati should also agree with this. और जो सब डेमिगॉड्स जो उपस्थित थे, वो जानते थे कि शिव जी को मनाना एक अलग चीज है, और पार्वती जी को इसके साथ संबंध में अगर उनको मनाना भी एक चीज है। If you are sitting together with your wife and somebody approaches to you and says, please take this poison, you probably first have to ask the permission from your wife, can I take it or not? ठीक इसी तरह जैसे पति पत्नी साथ में बैठे हैं, और अगर आपके सामने कोई प्रस्ताव दिया जाए, तो हमेशा पति अपनी पत्नी से पूछे कि प्रस्ताव को सम्मिलित करते हैं। So all these demigods, all the Prajapatis of the universe, they were praying and praying to Lord Shiva, and they were glorifying Lord Shiva and saying, please, you only one who can help us in this situation. तो सब जो डेमिगॉड्स थे और जो वहाँ की प्रजापति जो प्रीस थे, वो सब यही शिव जी से प्रार्थना कर रहे थे कि एक आप ही उनको है जो हमें इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। And then Lord Shiva looked at his wife, और तब शिव जी ने अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी को देखा, and his wife understood that he wants to do this service for the Lord. और पार्वती जी समझ गई थी कि शिव जी को ये सेवा करनी है भगवान विष्णु की भक्ति।
And she said, yes, you can do it. और फिर मैंने ध्यान किया And then Lord Shiva, he took all this poison, he concentrated this huge amount of poison within his palms. The poison became very less. और फिर शिव जी ने जो पूरा जो विष करने के लिए किया था बहुत ही सारा विष था उन्होंने अपने हाथों में उन्होंने लेके इसको ले लिया We all know when we come with our problem, it seems like this problem is huge. हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी तकलीफें आती हैं हम यही सोचते हैं कि मेरी तकलीफें जो है बहुत बड़ी हैं And when we start talking about this problem, and we talk and talk and talk for a long time, and then he takes this problem, somebody who is our spiritual master or our counselor or some senior devotee, and all of a sudden our problem becomes very little. और हम जब अपने उस तकलीफों के बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं और बातें करते हुए ये लगता है कि हमारी तकलीफ तो बहुत छोटी हो गई और वो तकलीफों को हमारे गुरु महाराज जी के पास हमारे काउंसलर के पास लेके जाते हैं It's, you know, I have this experience. I come with such a big problem, and then I put this big problem in front of my spiritual master, and he looks at this, and the problem becomes hardly visible. No problem whatsoever. महाराज जी को बता रहे हैं कि उनके जीवन में जब कोई बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ आती है तो उस तकलीफ को अपने गुरु महाराज जी के पास लेके जाते हैं और बिल्कुल ठीक उसी तरह जब महाराज देखते हैं तो उनकी वो तकलीफ बहुत ही ऊंची लगती है बहुत ही छोटी लगती है So in the same way, Lord Shiva looked at this poison, and just by looking at this poison shrank. It became a very small amount. ठीक उसी तरह शिव जी जब उस विष को देख रहे थे देखते देखते वो विष को पहले बहुत ही बड़ा था वो बहुत ही छोटा सा बहुत ही कुछ सा लग रहा था And then he drank this poison. फिर शिव जी ने उस विष को पी लिया But that's also very significant in this story, because when Lord Shiva drank his poison, he didn't drink it completely. ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब शिव जी ने उस विष को पिया तो उससे पूरा नहीं पिया He kept it in his throat, उन्होंने उस विष को अपने गले में अटका के रखा and his throat became Kalakanta or Nilakanta. His throat became very dark because of this. और शिव जी का जब वो गला था जहाँ पे उन्होंने विष को रोक रखा था तो उनका कलर चेंज हो गया काला नीला हो गया And there are different explanations why Lord Shiva didn't drink the poison completely. उसके भागवत के उल्लेख भी काफी ऐसे उल्लेख हैं कि क्यों भगवान जी ने विष को पूरा नहीं पिया And one very beautiful explanation which I read is that Lord Shiva knew that Lord Krishna is within his heart. उसमें से एक बहुत बड़ा सुंदर तात्पर्य है कि शिव जी को ये पता था कि भगवान कृष्ण जी जो है वो उनके हृदय में बसे हुए हैं He always meditates upon Lord Krishna who is in his heart. वो हमेशा भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं और मेडिटेट करते हैं जो उनके हृदय में समाये हुए हैं And he thought at this moment when he was drinking this poison, I cannot really burn Lord Krishna who is in my heart by drinking the poison completely, so I will keep it in my throat. भगवान शिव जी जो है वो विष को पूरा ग्रहण नहीं करते क्योंकि उनको चिंता रहती है कि जो भगवान कृष्ण जो मेरे हृदय में बसे हुए हैं जब मैं पूरा इसको पी जाऊंगा तो उनको भी कोई तकलीफ होगी तो वो अपने हृदय में उसको अटका के रखते हैं In this way, Lord Shiva saved the whole universe from this terrible poison which is called Kalakuta. भगवान शिव जी जो है बिल्कुल उसी तरह वो विष को पीने के बाद इस पूरे जगत को बचा देते हैं जो कालाकुंड विष है इसको पी के And in this chapter of Srimad Bhagavatam, Srila Sukadeva Goswami, he explains, at the end of this chapter, he explains that somebody who is serving others, saving others, trying to help other people, he is the most dear servant of the Supreme Lord. श्रीमद् भागवत ग्रंथ में श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने बताते हैं कि जो भक्त भगवान की सेवा में लगा है और जो भक्त भगवान के भक्तों की सेवा में लगा हुआ है वो सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है Why do we say that Lord Shambhu is the greatest servant of the Lord Vaishnavanam Yathasam? Why do we say this? हम ऐसा क्यों कहते हैं जो शिव शंभू जी हैं वो सबसे बड़े भगवान के भक्त हैं Only because he is ready to sacrifice everything, only because he is ready to do something for others at the cost of his own happiness and comfort. क्योंकि शिव शंभू जी वो भक्त हैं जो भगवान की सेवा में कुछ भी करने को तैयार है क्योंकि
क्योंकि उन्हें दूसरों को भगवान की सेवा के हिसाब से सबको खुश रखना है, अपनी सेहत पर ध्यान रखते हुए। So, this is some lessons of this beautiful lila, which we have to know, that Lord Shiva is very dear servant of Lord Vishnu, coming to this universe and doing ungrateful service in this universe. ये one of the pastimes जो शिव जी के बारे में जो ग्रंथों से पढ़ते हैं, जो लॉर्ड शिव जी हैं, जो भगवान की सेवा इस तरह करते हैं इस पृथ्वी पर। But at the same time, being in this universe, coming in contact with this material energy, he never forgets the Supreme Lord. ठीक उसी तरह जिस तरह शिव भगवान जी जो इस पृथ्वी में आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो कभी भी भगवान के नाम कभी भूलते नहीं। Why he never forgets the Supreme Lord? Because he serves everyone else. तो भगवान जी को भूलते नहीं हैं, क्योंकि वो भगवान के भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। He always sees everyone as the representative of the Supreme Lord and tries to serve them. वो हर एक मनुष्य जी को भगवान का ही रूप देखते हैं और उनको हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते हैं। And in the same way, in this way, he becomes the greatest devotee of the Lord. क्योंकि बिल्कुल उसी तरह ही श्री शंभू जी भगवान के लॉर्ड शिवा वो भगवान के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। And Lord Vishnu says that Lord Krishna in Bhagavad Gita even says that the one who serves in this way by trying to help other people is the most dear servant of mine. भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जो मेरा भक्त दूसरों की सेवा में लगा रहता है और उनको सेवा करता है, वो मेरा सबसे लोकप्रिय भक्त है। So in this night of Shivaratri, we may meditate on Lord Shiva as the greatest Vaishnava and the greatest servant of the Lord who is ready to do any service to the Supreme Lord. आज का जो महाशिवरात्रि का महोत्सव है, तो आज इस रात को हमें हमारा ध्यान लगाना चाहिए लॉर्ड शिव जी के ऊपर, और ठीक उसी तरह ही हमें प्रयास करना चाहिए कि आगे हमारे भक्तों का हमारे भक्तजनों का सेवा करें। Other people, when they come on the night of Shivaratri, they always ask Lord Shiva some material benedictions. ज़्यादातर भक्त लोग जब महाशिवरात्रि के दिन मंदिर आते हैं, वो शिव जी की पूजा तो करते हैं, पर शिव जी से हमेशा कुछ न कुछ अपेक्षा रखते हैं। Ladies come to the Supreme Lord, to Lord Shiva, and they ask, please give us nice husband. माता जी ज़्यादातर जो आती हैं, भगवान शिव जी की प्रार्थना करके कहते हैं कि मुझे एक अच्छा पति मिले। And sadhus come to Lord Shiva, and they drink bhang. साधु जो आते हैं मंदिर में, वो शिव जी के पास प्रार्थना करते हैं, भांग पीते हैं। But we come to Lord Shiva and we ask, Lord Shiva, please teach us how to serve the Supreme Lord. हम जब भगवान के पास आते हैं, हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि प्लीज हमें ये सिखाइए कि हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं। How to do some service to the Supreme Lord, even though it's ungrateful service, but still do some service for Him. भले ही वो जो सेवा हो बहुत ही ungrateful हो, बहुत ही खुश हो, लेकिन वो हमें कैसे करनी है वो आप मुझे बताइए। Without being disappointed by this ungrateful service. और हमें उस सेवा का बिल्कुल भी अविश्वास नहीं करना चाहिए और हमें उस सेवा करनी चाहिए। So this is little introduction, and now Sarvabhauna Prabhu will start his real Shiva Katha class. ये छोटा सा तो एक पास्ता ही था लॉर्ड शिव जी के बारे में, और अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे दिस ग्रेट सर्वंट ऑफ प्रभु जी को स्टेज पे बुला के वो भी आके प्रवचन करें। He is a great Kathakar. He will tell the stories about Lord Shiva. I didn't want to touch the stories so much. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Guru Bhakti Jnana Maharaj ki, Guru Maharaj ki, Shri Sarvabhauma ki. So thank you very much, Maharaj, for the nice question. Thank you. Maharaj was Very happy to see you. संस्कृत बाबा एक बार Maharaj Kinchit. Hare Krishna. संस्कृत आचार्य Hare Krishna. Acharya Namsme. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare